Hello everyone, this is Yamini Seni and today we are going to continue with our chapter number 5, The Happy Prince from class 9 English Moments book. So we had done with the first, second, third page and fourth as well. So we have to start it from the page number 33 and from the second paragraph. Others we had done in the previous class and in the previous videos. So let us start. So he plucked out the prince's other eye and darted down with it. He swooped past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand. What is the meaning of swooped? Swooped का मतलब होता है जैसे जो बर्ड है फ्लाई करती है अपने प्रे को पकड़ने के लिए, अपने शिकार को पकड़ने के लिए, तो नीचे की तरफ जाती है और थोड़ा सा और फिर वापस ऊपर की तरफ आ जाती है ना, झपट्टा मार के लाइक दैट. तो सिमिलरली जो बर्ड है वो अपने इस मोशन के थ्रू मैजिकल के पास जो ज्वेल है वो उसके पाम में पहुंचाती है, उसकी जो हथेली है उस पर पहुंचाती है. कौन से ज्वेल की यहाँ पे बात हो रही है? दैट इज़ अ सफायर विच इज़ देयर इन द अनदर आई ऑफ प्रिंस. So now, what a lovely bit of glass, cried the little girl, and she ran home laughing. Then the swallow came back to the prince. You are blind now, he said, so I will stay with you always. No, little swallow, said the poor prince, you must go away to Egypt. No, I will stay with you always, said the swallow, and he slept at the prince's feet. All the next day, he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in strange lands. Dear little swallow, said the prince, you tell me of marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of men and women. There is no mystery so great as misery. Fly over my city, little swallow, and tell me what you see there. So now what is happening between, this is the conversation between the prince and the swallow. So now जो prince है वो अपनी जो आई जो दूसरा सफ़ायर है वो भी हेल्प करने के लिए दे देते हैं मैजिकल को, और ये दोनों आपस में फिर बात करते हैं. सो swallow कहती है कि नहीं प्रिंस, अब आप ब्लाइंड हो गए हो तो मैं आपकी हेल्प करूँगी, जो भी आप देख नहीं सकते हो आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर सिटी. तो सिमिलरली जो प्रिंस है वो भी उन्हें यही कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि जो माइजरी है, मेरे जो देश के लोग हैं, जो मेरी कंट्री के लोग हैं, वो दुखी ना रहें. दैट इज़ द ओनली थिंग विच आई कंसर्न फॉर. सो नाउ सो द swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses. While the beggars were sitting at the gates, he flew into dark lanes and saw the white faces of starving children looking out listlessly at the black streets. Under the archway of a bridge, two little boys were lying in each other's arms to try and keep themselves warm. How hungry we are, they said. You must not lie here, shouted the watchman, and they wandered out into the rain. Then he flew back and told the prince what he had seen. So now still इसके बाद भी जो प्रिंस ने अपने रूबी सफ़ायर जो है वो दे दिए लोगों को, बट स्टिल जो लोग हैं वो अभी भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं. लाइक बेगर्स जो हैं वो बैठे हुए हैं, और जो रिच पीपल हैं वो अपने ब्यूटीफुल हॉर्सेस पे अपने मतलब मज़े कर रहे हैं, लाइक दे आर इन्जॉइंग देयर लाइफ. बट जो पुअर पीपल हैं, जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास खाने को खाना नहीं है, और वॉचमैन उन्हें डांट के भगा देता है एंड दे जस्ट रन इनटू द रेन. इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास क्लोथ्स नहीं है, तो इतनी ठंड होने के बावजूद दे आर ट्राई टू कीप देमसेल्व्स वार्म बाय एम्ब्रेसिंग ईच अदर. सो these are all the things which a swallow had witnessed over there. So now what happens, then he flew back and told the prince what he had seen. तो वो सारी चीज़ें आके प्रिंस को बताती हैं. I am covered with fine gold, said the prince. You must take it off leaf by leaf and give it to the poor. The living always think that gold can make them happy. सो नाउ व्हाट हैपेंस इज, नाउ प्रिंस कहते हैं कि अभी जो मेरी बॉडी पे जो मेरा स्टैचू है उसके ऊपर जो भी गोल्ड लगा हुआ है उसे लीफ बाय लीफ इन पुअर पीपल को दे दो, सो दैट इनको जो है वो आसानी रहे, या अपनी लाइफ जो है वो जीने में आसानी रहे. बिकॉज एवरीथिंग इज इन
we can say in this world we can buy from money, but not everything. We have some other things also, like feelings or love or emotions, which we cannot buy from money, but like basic needs, food or shelter, clothes, this we should or we can buy from money, right? So now let us come to the next thing. Leaf after leaf of the fine gold the swallow picked off, till the happy prince looked quite dull and grey. Leaf after leaf of the fine gold he brought to the poor, and the children's faces grew rosier, and they laughed and played in the street. We have bread now, they cried. Then the snow came, and after the snow came the frost. The streets looked as if they were made of silver. Everybody went about in furs, and the little boys wore scarlet caps and skated on the ice. The poor little swallow grew colder and colder, but he would not leave the prince. He loved him too well. He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking, and tried to keep himself warm by flapping his wings. But at last he knew that he was going to die. He had just enough strength to fly up to the prince's shoulder once more. Goodbye, dear prince, he murmured. Will you let me kiss your hand? I am glad that you are going to Egypt at last, little swallow, said the prince. You have stayed too long here, but you must kiss me on the lips, for I love you. It is not to Egypt that I am going, said the swallow. I am going to the house of death. Death is the brother of sleep, is he not? And he kissed the happy prince on the lips and fell down dead at his feet. At that moment, a curious crack sounded inside the statue, as he as if something had broken. The fact is that the leaden heart had snapped right into it. Certainly was a dreadful hard frost. Early the next morning, the mayor was walking in the square below in company with the town councillors. As they passed the column, he looked up at the statue. Dear me, how shabby that happy prince looks, he said. How shabby, indeed, cried the town councillors, who always agreed with the mayor, and they went up to look at it. The ruby has fallen out of his sword, his eyes are gone, and he is golden no longer, said the mayor. In fact, he is little better than a beggar. Little better than a beggar, said the town councillors. And here is actually a dead bird at his feet, continued the mayor. We must really issue a proclamation that birds are not to be allowed to die here. And the town clerk made a note of the suggestion. So they pulled down the statue of the happy prince. As he is no longer beautiful, he is no longer useful, said the art professor at the university. Then they melted the statue in a furnace. What a strange thing, said the overseer of the workmen at the foundry. This broken lead heart will not melt in the furnace. We must throw it away. So they threw it on a dust heap where the dead swallow was also lying. Bring me the two most precious things in the city, said God to one of his angels. And the angel brought him the leaden heart and the dead bird. You have rightly chosen, said God. For in my garden of paradise this little bird shall sing forever more, and in my city of gold the happy prince shall praise me. So this story is by Oscar Wilde. So what happens in the story in the end, that जो प्रिंस है वो टर्न बाय टर्न अपनी सारी गोल्डन लीव्स जो है वो लोगों की हेल्प करने के लिए लगा देते हैं, एंड देन उसके बाद जो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, और उस ठंड के कारण जो है स्वेलो उसकी जो है वो डेथ हो जाती है. तो इसके बाद समन हाउ जो स्वेलो है अपनी डेथ से पहले वो प्रिंस के पास जाती है, पहुंच पाती है, फ्लू कर पाती है वहाँ तक, एंड देन उसे बताती है कि दिस इज़ माई लास्ट टाइम केम नाउ, और अब मुझे जाना होगा. एंड वो किस करती है लिप्स पर प्रिंस के, एंड शी डाइड ऑन हिज
feet. उसके बाद जो मेयर है, जो काउंसलर है ऑफ द टाउन, वो आते हैं और देखते हैं कि किस तरह से जो प्रिंस, जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है वो ख़राब हो चुका है बिल्कुल, और जो यूनिवर्सिटी विट्स है, जो प्रोफेसर है, उनको भी मतलब लगता है कि ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है, तो इसे आप फ्रांस के अंदर जो भट्टी होती है उसके अंदर आप इसे मेल्ट कर दो। तो वो देखते हैं कि इसके अंदर जो एक हर्ट है वो तो मेल्ट नहीं हो रहा है, तो उसे एक हीप ऑफ डस्ट के ऊपर फेंक देते हैं, जहाँ पे जो लिटिल स्वेलो है उसकी बॉडी भी पड़ी होती है। देन इन द एंड हम क्या देखते हैं कि जो गॉड है वो अपने एंजल से बात कर रहे हैं कि 2 प्रीशियस थिंग जो है सिटी से वो लेकर आओ। तो जो एंजल्स हैं वो लेकर आते हैं स्वेलो को और प्रिंस को। तो गॉड कहते हैं कि यस, तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया, जो ये स्वेलो है वो मेरे गार्डन में, जो गार्डन ऑफ हेवन है, उसके अंदर फॉरएवर के लिए सिंग करेंगे, और जो प्रिंस है वो जो हमारा गार्डन है उसे प्रेज़ करेंगे, और प्रेज़ करेंगे मुझे भी। सो दिस इज़ द स्टोरी बाय ऑस्कर वाइल्ड। दिस इज़ वेरी टचिंग स्टोरी। सो in next class we will take up some questions and what we learned from this chapter. Okay, so till then keep reading, just go through this chapter. If you feel anything difficult, so just write it down in the comment box. I'll definitely get back to you. Goodbye.